Hello everyone, once again welcoming you back to my channel Anirvans Sci, and today we are going to talk about acid, bases and salts. What does come to your mind when you think about acid, bases and salts? Definitely you think of acid as something that is sour in taste and bases something as something of slippery to feel. It's not it. So let's see what is an acid, what is a base, what is a salt. Acids are substances that form hydrogen ions when dissolved in water. That means any chemical, if you put it in water and if it releases hydrogen ion, then it is an acid. For example, hydrochloric acid, if you dissolve it in water, will release hydrogen ions and chloride ions. Similarly, sulfuric acid will release hydrogen ions and sulfate ions. And nitric acid will give you hydrogen ion and nitrate ions. So you see that any substance that has been put in water is releasing hydrogen ion, that is basically an acid. Next, what are bases? Bases are oxides and hydroxides of metals that react and neutralize acids to form salt and water only. And bases which are soluble in water are called alkalis. Of course, not all bases fit into this category. For example, ammonia. Alkalis are substances that form hydroxide ions in water. Like sodium hydroxide gives sodium ion and hydroxide ions. Calcium hydroxide gives calcium ion and hydroxide ions. Now, if we talk about acids, we need to remember something, that in acid solutions, there will always be more number of hydrogen ions as compared to hydroxide ions. And in alkali solutions, there will be more hydroxide ions than hydrogen ions. Acids that dissociate or ionize to a large extent are called strong electrolytes or strong acids. Similarly, acids that dissociates only to a small extent are called weak acids and weak electrolytes. Bases can be strong or weak depending on the extent to which they dissociate and produce hydroxide ions. Most metal hydroxides are strong electrolytes and strong bases. Of course, ammonia is an exception. Ammonia is a weak electrolyte and a weak base. Some common acids and their anions. Some common acids which you can name includes hydrochloric acid, hydrobromic acid, hydroiodic acid, nitric acid, sulfuric acid. All these are some examples of common acids. Some common weak acids include hydrofluoric acid, nitrous acid, sulfurous acid, phosphoric acid. All these are examples of some common weak acids. Then we come to the properties of acids. When you talk about the properties of acids, the first thing that comes to our mind is that acids are sour in taste. Acids are highly corrosive. That means जहाँ पे भी एसिड गिरता है तो उस सरफेस को खराब कर देता है. And acids are good conductors of electricity due to the presence of charged particle. And what is the charged particle in acid? The hydrogen ion. Acids turn blue litmus paper red. Properties of bases. Bases react with fats to form soap and glycerol, and this process is called saponification. Bases have a pH value of more than 7. Dilute solutions of bases are bitter in taste. Bases are also highly corrosive. Then bases turn red litmus paper blue. So bases are formed when alkalis metals or alkaline earth metals react with water. The word alkali and alkaline basically means basic as opposed to acidic. Next, now we'll come to chemical properties of acids. And what are the chemical properties of acids? Acids react with metals to give salt and hydrogen, but we must always remember that in this case the metal must always be placed above hydrogen in the reactivity series to give salt and hydrogen, otherwise we will only get a salt. For example, magnesium reacts with sulfuric acid to give magnesium sulfate and hydrogen ion. Acids react with bases to give salt and water. The base dissolves in acids and neutralizes it, and a salt is formed along with water. For example, sulfuric acid reacts with copper oxide to give you copper sulfate and water. Then reactions with metal carbonates. Acids react with metal carbonates to give an effervescence along with the production of carbon dioxide, water and salt. For example, hydrochloric acids react with calcium carbonate to give calcium chloride and
water. So calcium chloride is the salt, water is produced, and carbon dioxide is produced. Salt, water, and carbon dioxide is produced whenever a acid reacts with metal carbonates. Similarly, when an acid reacts with metal hydrogen carbonates, we will get an effervescence. Along with that, we will get salt water and carbon dioxide. For example, hydrochloric acid reacts with sodium hydrogen carbonate to give sodium chloride, water, and carbon dioxide. Similarly, acids react with metal oxides to produce salt and water. For example, hydrochloric acid reacting with sodium sulfate gives sodium chloride and water. Then the next thing which comes to our mind is neutralization. What is neutralization? It is the phenomenon in which an acid neutralizes a base to give salt and water. So acid plus base gives salt and water. That is a neutralization reaction. Or you can also say that they are double displacement reaction. So all neutralization reactions are double displacement reaction. For example, hydrochloric acid reacts with sodium hydroxide to give sodium chloride and water. Similarly, sulfuric acid reacts with potassium hydroxide to give potassium sulfate and water. Now, one more thing we should be aware of is that what is hydronium ion? Formation of hydronium ion. Basically, hydrogen ions cannot exist singly. So when you put an acid in water, it dissociates, and the hydrogen ion from it goes and combines with the water molecules to form something called hydronium ion, that is H3O plus, and it is more stable. Acids can contain different number of acidic hydrogens and can yield different number of hydronium ions in solutions. उसके बाद आता है यूजेस ऑफ एसिड्स. एसिड्स के बहुत सारे यूज है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टोमक प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है. सल्फ्यूरिक एसिड कार बैटरीज में यूज होता है एज ए ड्राइंग एजेंट. नाइट्रिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स में लगता है. इथानोइक एसिड फूड इंडस्ट्री में यूज होता है. फैटी एसिड साबुन बनाने में लगते हैं. एस्कॉर्बिक एसिड मेडिसिन के काम में आता है. नेक्स्ट वी कम टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. बेसिस क्या है? जो केमिकल पानी में मिलाने से हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं. अब इनका केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला क्या आता है कि रिएक्शन विद मेटल्स. बट यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे कि एसिड में हमने बताया था कि एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन. द ओनली थिंग वी शुड रिमेंबर इज दैट द मेटल मस्ट बी प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज. और यहाँ पे क्या है कि सम बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन. और दूसरा रिएक्शन क्या है? जस्ट जैसे कि हम देखा कि एसिड वाले केस में एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. यहाँ पे बेस रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड वाटर. Ammonium salts are decomposed when mixed with base like sodium hydroxide. The ammonia is readily detected by its pungent smell. It has got a strong smell, and by turning damp red litmus paper blue. This reaction can be used to prepare ammonia and also as a taste for ammonium salts. Next, chemical properties of bases. Alkalis are used to produce insoluble hydroxide precipitates of many metal ions from their soluble salt solutions. For example, sodium hydroxide reacts with copper sulfate to give sodium sulfate and copper hydroxide. This reaction can be used as a simple test to help identify certain metal ions. Next we come to salt. अभी इतना देर तक हम बात कर रहे हैं कि एसिड प्लस बेस रिएक्ट करने से सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस होता है, या जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब भी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है. तो ये सॉल्ट है क्या? बेसिकली जब भी हम सॉल्ट के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में हमारा कॉमन सॉल्ट की बात आता है, जो कि सोडियम क्लोराइड है. बट इन केमिस्ट्री salts are any substance which is formed by the reaction between an acid and a base. So normally salts are formed when all the replaceable hydrogen ions in acids have been completely replaced by metallic ions. For example, hydrochloric acid reacts with sodium hydroxide to give sodium chloride and water. Similarly, sulfuric acid reacts with zinc oxide to give zinc sulfate and water. And जो normal salts होते हैं वो neutral to litmus paper होते हैं. फिर salts कितने टाइप के हैं? salts काफ़ी तीन टाइप के होते हैं mainly. Normal salts, acidic salts and basic salts. In case of acidic salt क्या होता है कि the acid is stronger than the base. When the acid is stronger than the base, then you will get an acidic salt, right? For example, सोडियम सल्फेट जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या बन रहा है? आपको क्या मिल रहा है? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट. और एसिडिक सॉल्ट ब्लू लिटमस पेपर को रेड टर्न कर देता है.
ठीक है। फिर बेसिक सॉल्ट में क्या होगा, बेसिक सॉल्ट में बेस विल बी स्ट्रॉन्गर, द बेस विल बी स्ट्रॉन्गर, you have to take a strong base and you have to react with a weak acid, then you will get a basic salt. Basic salts contain hydroxide ions. They are formed when there is insufficient supply of acid for the complete neutralization of the base. A basic salt will turn red litmus paper blue and will react with excess acid to form normal salt. फिर सॉल्ट और दो टाइप से भी क्लासिफाई किया जाता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट एंड एनहाइड्रस सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट्स दैट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट। एग्जाम्पल CuSO4 into 5H2O, Na2CO3 into 10H2O, CaSO4 into 2H2O, जिसको हम जिप्सम नाम से भी जानते हैं। फिर एनहाइड्रस सॉल्ट कौन से होते हैं, जिस सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होता है। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दैट इज प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट, दैट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है। सो सॉल्ट दो टाइप से क्लासिफाई होता है, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट को छोड़ के भी हम सॉल्ट को दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं। हाइड्रेटेड सॉल्ट जिसमें कि वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो हाइड्रेटेड सॉल्ट है, और जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे उसको हम एनहाइड्राइज्ड सॉल्ट बोलते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के, ये सारे एग्जांपल्स हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट के। ठीक है, जैसे कि कोबाल्ट सल्फेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, निकल सल्फेट है, एंड फिर आपका कॉपर सल्फेट हो गया। तो बहुत सारे सॉल्ट है जो कि हमारा एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट्स का एग्जांपल है। उसके बाद आता है यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। यूजेस ऑफ सॉल्ट्स के बहुत सारे यूज है, अलग अलग सॉल्ट अलग अलग काम पे लगते हैं। जैसे कि एमोनियम क्लोराइड टॉर्च बैटरीज में यूज होता है, एमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, कैल्शियम क्लोराइड एज ए ड्राइंग एजेंट यूज होता है, आयरन सल्फेट इन आयरन टैबलेट्स में यूज होता है, मैग्नीशियम सल्फेट भी इन मेडिसिन यूज होता है, इन एंटासिड्स बेसिकली। पोटेशियम नाइट्रेट गन पाउडर बनाने में लगता है। सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड किस में यूज होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। एंड इसी तरह से और भी बहुत सारे सॉल्ट है जो अलग अलग काम पे लगते हैं हमारे। फिर नेक्स्ट थिंग है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल इज ए मेजर ऑफ द रिलेटिव एसिडिटी और अल्कालिनिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। ये एक स्केल है जो हमें हेल्प करता है समझने में कि एक सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, और एसिडिक है तो कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है। ठीक है, एंड दिस इज अ स्केल व्हिच इज नंबर्ड फ्रॉम 0 to 14। उसमें 7 जो होता है वो न्यूट्रल वैल्यू होता है, 7 के नीचे जो भी वैल्यूज है मतलब 0 to 7 वो सारे एसिड्स होते हैं, एंड 7 के अबव अप टू 14 जो भी वैल्यू होते हैं वो आपके बेसिस होते हैं, और कंप्लीट 7.0 दैट विल बी ए न्यूट्रल सब्सटेंस लाइक वाटर। अब यहाँ पे ध्यान इस रखना है कि पीएच स्केल में जितने वैल्यूज अब 7 से नीचे हैं, the more you go towards 0 the acid is going to be stronger. Similarly, in case of base, the more you go towards 14 the base is going to be stronger. A change of 1 unit in pH is a 10-fold increase in the acid or basic strength. ये बात आपको ध्यान रखना है। 1 unit change मतलब suppose there is an acid जिसका pH value 4 है और एक एसिड है जिसका pH वैल्यू 3 है, तो जो 3 pH वाला होगा वो 10 times stronger होगा than the acid which is having a pH value of 4. Now pH range of few common substances like gastric acid जो कि हमारे स्टमक में होता है उसका pH रेंज होता है 1.6 to 3.0, सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स का 2 to 4, लेमन के 2.2 to 2.4, विनेगर के 2.4 to 3.4, उसी तरह से टोमेटोज के 4.0 to 4.4, ह्यूमन यूरिन का 4.8 to 8.4, काउज मिल्क जो होता है वो 6.3 to 6.6, इवन ह्यूमन सलाइवा 6.5 to 7.5, एग वाइट जो होता है उसका pH वैल्यू 7.6 to 8.0 है, मतलब ये बेसिक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड हाउस होल्ड एमोनिया जो होता है वो 11 to 12 उसका pH रेंज होता है। फिर बात आता है कि एक गिवन सब्सटेंस या गिवन सैंपल एसिड है या बेस है, हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम we use certain chemicals which are known as indicators. So indicators are substances that tells us the nature of a given substance, that is whether it is acidic or basic, and what is the pH value of that substance.
So indicators are substance that have different colors in acidic and alkaline solution. अब ये इंडिकेटर्स दो टाइप के हो सकते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स जैसे कि आपका लाइकन हो गया नेचुरल इंडिकेटर, फिर रेड कैबेज के जूस हो गए, टर्मरिक हो गए. These are all examples of natural indicators. And synthetic indicators में आपके आते हैं मिथाइल ऑरेंज, फेनोप्थेलिन, ये सब synthetic indicators है. तो आज हम इतना तक ही बात करेंगे. अगले सेशन में हम इस चैप्टर को आगे ले जाएंगे और we will talk about the different types of salts and the chemicals that can be prepared from the salt. Thank you everybody. I hope you enjoyed today's lecture, and definitely this is going to help you if you go through it carefully. Thank you.